Hello, you're watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Welcome to Prime Time Bulletin. Well, before moving ahead, let's have a quick look on headlines first. Prime Minister Narendra Modi felt stated at Maharana Pratap Sports Stadium, Raipur, ahead of the inauguration of the 38th National Games. BJP delegation meets EC over Yamuna Row, accuses Kejriwal playing poisonous politics. Delhi elections, from Sheesh Mahal to liquor scam, Rahul Gandhi hits out at Kejriwal in Delhi rally. Delhi Chief Minister Atishi raises alarm over Delhi's water crisis, seeks Election Commission's intervention. ICC honours Jasprit Bumrah after record-breaking show in 2024, names Indian pace spearhead men's Test Cricketer of the Year. Well, moving into the lead stories, Prime Minister Narendra Modi was honoured at the Maharana Pratap Sports Stadium in Raipur in a special ceremony prior to the opening of the 38th National Games, and the event saw the presence of Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmeet Singh and Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, who joined in the celebrations, marking a significant moment ahead of the highly anticipated sporting event. भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अति के राष्ट्रीय के उद्घाटन समारोह में अब आप पहुंचे और आप सभी दर्शकों से मिलने तीन लोग से का दौरा ले रहे हैं। आप सभी का अभिवादन करने, आप सभी को ग्रीट करने जोरदार तालियां लगातार उत्तराखंड के वासियों 1, 2, 3 हो जाए ये ऐतिहासिक आयोजन है। उत्तराखंड की रजत जयंती के दौरान उत्तराखंड एक बार फिर स्वागत। यहाँ उपस्थित दर्शक हमें ऑनलाइन और टेलीविजन पर देख रहे करोड़ों भारतवासी, आप सबका स्वागत है। बस कुछ क्षणों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम का हम शुभ आरंभ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम उत्तराखंड के सुनहरे फूल भेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड की पावन धरा पर बुनी एक शॉल, उत्तराखंड की कला का प्रतीक और खेल जगत का प्रतीक एक स्पोर्ट्स सुवीनियर और फिर प्यारा विजय अभियान पर लिखी एक किताब हिंदी और इंग्लिश Constituency, Union Home Minister Amit Shah alleged that Kejriwal had blocked PM Modi's Ayushman Bharat Yojana. He further stated that as soon as the Delhi government is formed, in the first cabinet meeting, Delhi residents would be provided free healthcare facilities up to ₹10 lakhs. He also promised that senior citizens would receive a pension of ₹2,500 and the pension for widows would be increased to ₹3,000.
Moving on to other story, Union Minister Nirmala Sitharaman, after meeting with the Election Commission regarding the Yamuna water issue, strongly criticized former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's recent statement. Sitharaman called it unfair, irresponsible and violative of the MCC, describing it as dangerous for everyone except Kejriwal, whom she labelled a self-proclaimed anarchist. She also further stated that the statement had instilled fear among the Delhi residents and also could have serious implications how elections were conducted in India. Sitharaman questioned how a former CM could accuse another CM of actions asking to genocide, calling it an insult to the people of Haryana. She also urged the Election Commission to take action that would prevent Kejriwal from campaigning in Delhi any further. Today, a delegation from Bharatiya Janata Party, in which my senior colleague Bhupendra Yadav ji, the Chief Minister of Haryana, Saini ji, Delhi Pradesh BJP's President Shri Virendra Sachdeva ji, and the media coordinators were with us. We came to protest and submit a petition to the Election Commission on the very unfair, irresponsible and violative of Election Code of Conduct statement made by the former Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal. It is a very dangerous statement. It is dangerous for all of us. It is dangerous for India's federal structure and the electoral politics. But it is not dangerous for him, who is a self-proclaimed anarchist. So it comes easily for him to speak irresponsibly. But the statement that he made has actually brought in fear in the minds of the public in Delhi. Think of water in Delhi, people get a sense of fear, saying, is there poison in it? There cannot be a more irresponsible statement made by somebody who held the position of Chief Minister till recently against another Chief Minister from Haryana, saying water. Well, we have live from Raipur, where Uttarakhand Chief Minister addresses a public gathering. Let's have a look on it. उपस्थिति में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री इस पहले 14 दिन का और अब कुल मिलाकर 17 दिन खेल महाकुंभ का आयोजन प्रदेश के विभिन्न 11 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 10,000 से अधिक खिलाड़ी करीब 35 खेलों में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से हम इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर की इतनी महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए मैं आपका प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। यह आयोजन जहां एक ओर खेल प्रतिभाओं को अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करने का एक अभिनव मंच प्रदान करेगा, वहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन खेलों से अमृत पीढ़ी की अनेक ऐसी प्रतिभाएं निकलेंगी जो आने वाले समय में उत्तराखंड का ही समूचे भारतवर्ष का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी। भाई बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारा देश वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए अपनी कमर कस चुका है। जहां एक ओर हम शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण आदि सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एवं डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में भी विश्व के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सैन्य आधुनिकीकरण, वैश्विक कूटनीति एवं प्रबंधन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास सहित अन्य सामरिक क्षेत्रों में भी नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं।
वैचारिक धरातल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हो, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, सीएए का कानून लागू करना हो, 3 तलाक की समाप्ति हो, आदि हमारे अधिकतर बड़े संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। भाइयों बहनों, हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरित होकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने इस वर्ष राज्य में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है, जिससे एक और जहां राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी बल मिलेगा। मुझे आज आदरणीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में ही हमने विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूर्ण करने में हम सफल रहे हैं। यानी कि कल अर्थात हमने 27 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बिना असंभव था। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से प्रारंभ हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने आए देश भर के सभी खिलाड़ियों को हम उच्च स्तरीय खेल सुविधा मुहैया करवाने के साथ साथ उनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने में भी सफल रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह अतुल्य भारत देवभूमि उत्तराखंड में है, जहां भारत के राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। इस बहुखेल आयोजन में देश भर से एथलीट्स पदक के लिए कम्पीट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह एथलीट्स के लिए उत्साह, तालियां और प्यार दिखाने का समय है। देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, सितारों, चैंपियंस, इनक्रेडिबल इंडिया के इनक्रेडिबल अतुल्य एथलीट्स का स्वागत करें। यहाँ भारत के कोने कोने से आई टीम्स के महिला और पुरुष एथलीट्स 35 खेलों में कम्पीट करते नजर आएंगे। जोरदार तालियों के साथ आप सभी मिलकर इनका अभिनंदन करेंगे। Here comes the Athletes Parade at the 38th National Games of India. Well, that was a live from Raipur, where Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami addressed a public gathering. While moving ahead with a bulletin, while addressing a public rally at West Vinod Nagar, Congress MP and Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi criticized former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, alleging a disconnect between his promises and actions. Rahul Gandhi also said Kejriwal says nothing that comes to his mind, and when he came he had a small car and had said that he will do a new kind of politics. He had said he will change Delhi, but when poor people were in need, he wasn't even there, and when riots happened, he wasn't even there, and he said he will do clean politics but in Delhi. Well, the biggest scam of liquor happened, and you must have seen the photo of his house, and Kejriwal stays in a place, Sheesh Mahal, so that is the truth, he said. केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई
कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो ये सच्चाई है। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। Delhi Chief Minister Atishi, along with Punjab CM Bhagwant Mann, met the Election Commission to raise concerns over Delhi's worsening water crisis. And following the meeting, Atishi said, "Just now, I, along with Punjab CM Bhagwant Mann, met with the Election Commission and we had a long discussion over the water issue in Delhi." He told them how water coming from Haryana has poisonous ammonia levels and water treatment plants in Delhi can only treat water up to ppm 1 and ppm 2. However, since the last few days, the ammonia levels have been increasing up to ppm 7, which is poisonous, and if this continues, many of our water treatment plants will shut down and 30% of Delhi won't be able to get water. Election Commission has assured that they will take action in favor of people of Delhi, she said. अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और मेरी पूरी इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, फुल कमीशन से मुलाकात हुई। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि किस तरह से यमुना में पानी जो हरियाणा से आ रहा है उसमें अमोनिया का लेवल जहरीले लेवल्स तक पहुंच गया है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm 2 ppm तक अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो अमोनिया का स्तर है 4, 5, 6, 7 ppm तक पहुंच गया है। 7 ppm अमोनिया यानी जहरीला पानी। हमने इलेक्शन कमीशन से यह आग्रह किया है कि अगर इसी तरह जहरीला पानी आता रहा तो हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। 30% दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन से आज शाम को मिलने हरियाणा के भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ने आश्वस्त किया है कि पानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, लोगों के जीने मरने से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि दिल्ली के लोगों के हित में जो डिसीजन होगा, इलेक्शन कमीशन हरियाणा का पक्ष सुनने के बाद वो डिसीजन लेगी। Well, Team India's ace spearhead Jasprit Bumrah has been named as the ICC Men's Test Cricketer of the Year 2024. The ICC had made the announcement public over various social media platforms, and he was among the standout bowlers from all around the world and produced a marvellous spell throughout the year. He set multiple records and amazed a huge wicket rally. After winning the prestigious award, Bumrah expressed his gratitude after winning the matchup. He also reflected that his honour not only recognizes his work but also the steadfast encouragement of his teammates, coaches and supporters who never stopped believing and motivating him.
Well, military bands have commenced the rehearsals for the beating retreat ceremony scheduled to take place on January 29th at Vijay Chowk in New Delhi. The beating retreat marks the culmination of the Republic Day celebrations in India, and it's a grand event where the military bands, along with the Indian Armed Forces, showcases a mesmerizing performance, signaling the conclusion of the national festivities. The ceremony holds great historical and cultural significance, drawing attention from people across the country. In a public rally in Gona Assembly constituency of Northeast Delhi, AAP National Convener Arvind Kejriwal stated that everyone is receiving a zero electricity bill. He explained that being an engineer, he assures that electricity is available to people 24/7 as the son of a baniya, he is able to provide it for free. He also responded to BJP's criticism about funding his announcements, claiming that he is a magician. सबका बिजली का बिल जीरो आता है। 24 घंटे बिजली इंजीनियर ने इसलिए कर दी और फ्री बिजली बढ़ने का बेटा ने इसलिए कर दी। हिसाब के बाद में बीजेपी वाले बड़े चिल्लाते हैं, केजरीवाल का घोषणाएं करता जा रहा है, पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा बोलने का बेटा है, जादूगर चिंता क्यों करते हो, पैसा भी आ जाएगा, है कि नहीं। मैंने कहा बिजली फ्री करूंगा, फ्री कर दी। मैंने कहा पानी फ्री करूंगा, पानी फ्री कर दिया। मैंने कहा बस फ्री करूंगा, बस फ्री कर दी। जितनी योजनाएं कह रहा हूं सारी पूरी करूंगा, पैसे की चिंता मत करना। आम खाने से मतलब है, कुछ भी मिलने से मतलब है। सबका बिजली का बिल जीरो आता है। The Meerpet murder case has shocked the Telugu states, with the police confirming that the victim, Venkata Madhavi, was killed by her husband Gurumurthy. Rachakanda Commissioner of Police Sudhir Babu revealed shocking details during a media briefing on the case. According to CP, the incident occurred on the morning of the 16th when a heated argument broke out between Madhavi and Gurumurthy. Following the argument, Gurumurthy decided to kill his wife. He first struck her, causing her to fall against the wall, after which she lost consciousness. Despite this, Gurumurthy strangled her to ensure she was dead. After confirming that Madhavi had died, Gurumurthy proceeded to undress her and move the body to the bathroom. He then retrieved a knife from the kitchen and began mutilating the body. He served her arms and legs and placed the limbs in a bucket. Gurumurthy then used a water heater to cook the body parts, and once the cooking process was done, he placed the cooked parts on the stove and ground the bones into powder. CP further revealed that Gurumurthy carefully disposed of the remains, placing some bones in the dustbin and licking the powder multiple times to eliminate the traces. He spent around 8 hours grinding the body and used detergent and phenol to remove any evidence. Throughout the entire process, he kept the kitchen door, house and windows open.
ప్రొవొకేషన్ రాలేము, దీనికి పర్ఫెక్షన్ ఉంది, దాంతో ప్లానింగ్ ఉంది. పిల్లలు అక్కడే ఉంచేసి వచ్చాడు. ఇంకా ఈ విషయాలు అకారణం గొడవ పెట్టుకుని అతను వైఫ్ దాడి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎవిడెన్స్ పిల్లలు ఉంటే తెలుస్తుందని చెప్పేసి పిల్లల్ని వాళ్ళ చుట్టాల ఇంట్లోనే పెట్టాడు. పెట్టేసి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. వచ్చి భార్య పైన ఆ రోజు మార్నింగ్ కొట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు. తీసుకెళ్లి గోడకు దాన్ని స్మాష్ చేశాడు. గట్టిగా కొట్టాడు గోడకి. సస్టైన్ ఇంజరీస్ అండ్ దెన్ వెళ్ళాం. అప్పుడు ఆయన కూర్చొని గొంతులు మన్నేసేసి ఆమె చంపడం జరిగింది. ఇది ఎలా మనకు తెలిసిందంటే ఈ చెప్పిన జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా తర్వాత తీసుకెళ్లి నది అక్కడ చెరువులో ఎలా వేశాడు అవన్నీ కూడా ట్యాంక్ లో ఎలా వేశాడు అన్నీ కూడా మనకు వీళ్ళ ఈ రోజు వస్తువు వెళ్తున్నాడు కదా, అతను ఎంక్వైరీ ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ పంపిస్తున్నాం, మళ్ళీ వస్తున్నాడు. ఆ ప్రాసెస్ లో ఈరోజు ఉదయం వాళ్ళ ఈ అమ్మాయి చనిపోయిన వాళ్ళ అమ్మాయి మేనమామకు ఇతను చెప్పాడు జరిగింది ఏంటి ఇలా. అతను ఆయన ముందు కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు. ఆ కన్ఫ్యూజ్ చేసింది అతను వచ్చి మళ్ళీ మన పోలీసుని పిలిచినప్పుడు ఇలా జరిగిందని చెప్పాడు. ఇదంతా దీంట్లో ఇవన్నీ కొట్టడం జరిగిన తర్వాత అది చనిపోయిన తర్వాత ఆవిడ్ని ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఖర్చుతో ఫస్ట్ లెగ్స్ కట్ చేసి తర్వాత 2 చేతులు బాడీ పార్ట్ ఒకటి దాని తల 4 పార్ట్స్ కట్ చేసి వీటిని ఒక వాటర్ లో పెట్టి హీట్ చేస్తాం కదా, మనం చిన్నప్పుడు స్నానం చేయడానికి పెట్టుకున్న అటువంటి దాంట్లో పెట్టి చిన్న చిన్న పార్ట్స్ చేసిన పెట్టి హీట్ చేశాడు. అటువంటి ఒక అనవసరమైనటువంటి Well, those were the latest updates in Prime Time Bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kuttapalli. Stay tuned.